Good afternoon, all participants. On behalf of Indian Railway Institute of Financial Management, Secunderabad, I extend warm welcome to each one of you for today's webinar on traffic book. And to take up the session, we have Sri K.K. Subramani, AFA, IRIFM. Welcome, sir, and it's over to you to comment the session. Thank you, Bernard. Good afternoon to all participants. Today, the topic that I'll be dealing will be on traffic book. Okay, so I will also try to balance and tell you in Hindi because this is also the last time an opportunity given to you for writing theory exam. Next time orders probably we will be having MCQs and followed by descriptive also. So I will take forward this. Am I audible, please? Yes, sir, audible. Thank you. So the presentation will be on traffic book. Before going to the actual part of the traffic book, let us see what are all the different types of earnings from where railway gets its traffic earnings. So traffic earnings are yatayat kamai. So passenger earnings is called yatri kamai. This is actually, we have seen that this is represented by P. Other coaching will be Anya coaching. If we add this passenger earning plus other coaching, it becomes coaching earning. That is nothing but our abstract X. Or if you see the F2 of finance code volume 2, it is 90 and 91. Okay. Coaching earnings is abstract X. Goods earning is small. That is Y. Sundry is Anya. This, if you add these three, it will become the gross earnings. Actually, this is how the traffic earnings is comprises of. Now let us see what are all the different type of earnings that will contribute for the traffic earning. Before that, we will look into the budget. In the recent budget, we have seen in 22-23, the passenger earnings for the actuals for 2021 is given. It is around 15,248 crores. The budget revised is 44,375 crores. This year, the budget for 22-23 has been given as 58,500 crores under passenger. About 6,000 crores is given under other coaching. So last revised estimate say 5,000. This is 1,000 more. So this is the target that is given. Goods earnings last 21-22 revised is 142,575. This year the budget for 22-23 is 157 crores. Sundry earnings, this time it's pegged as 10,000 crores for 22-23, whereas for revised estimates show that 7,000 crores. The total earnings, gross earnings is for the year 22-23 is 231,500 crores, and for gross earnings for revised is 198,950. Suspense and miscellaneous is given as 100 plus 400, 500. Total gross traffic receipts will be 232 crores. This is the target that is given for the financial year 22-23. So this is a small information that I am sharing with you. So just keep this in mind, and accordingly we will have to achieve this target. And during the course of the year, what all changes happens, the earnings will, whether we will get these earnings or not, we have to wait and watch until we perform in all the four types of service sets. So service sets mainly comprise of passengers, other coaching, goods and sundries. If we add all these three earnings, it will be a gross earnings. If we add suspense and miscellaneous receipts, it will be the gross traffic receipts. Now I will take forward to the next slide. What are all the coaching earnings? We have discussed here passenger earnings plus other coaching earnings is coaching earnings. To have an idea what are all the other coaching earnings. Other coaching earnings is nothing but the abstract X, issue of tickets. Both PRS and UTS, duly collecting either cash or vouchers. How it is collected? It is collected in cash or it is collected in vouchers. What are all the type of vouchers? Military warrants, police warrants, credit notes. This will be exchanged in lieu of cash. So some is payment made by cash, some payments are made by through partly it is exchanged through vouchers. Booking of parcels, luggage, HCD, special trains, coaches. This is the another type of coaching earnings. Leasing of SLR parcel cargo trains, postal haulage charges, earning through special check of trains, penalties levied by TTs using the EFTs, issue of platform ticket, clerk agent cancellation. These are the main coaching earnings. Of course, there are other coaching earnings also that we will discuss in the next slide. So you will see what does the passenger earning. Passenger earnings is compiled in according to F2 it is 90. So what are all the types of passenger?
Passenger earnings comes from PRS, passenger reservation system. What we do is we go to the counter and we get our tickets booked through for reservation. This is either can be done going to the station or it can be done through any of the other sites that is available, either through IRCTC, etc. All those things for which you are taking reservations for long distance trains and all are PRS. UTS is nothing but the uninterrupted ticketing system or unreserved ticketing system, where we can get our ticket for passenger trains and also short distance trains, where we can go to the booking window and we can collect. This is how the these are the two important and major areas where these two are collected. Apart from that, we have blank paper tickets. Suppose if the main stock of tickets are not available, stations or some stations also use the blank paper ticket to issue tickets in lieu of the PRS and UTS if they are out of stock or if there is any problem. So tickets can also be issued through BPT, where some are also in case of stations where they are not having this reservation or any other facility. So it is issued like that. PCT, of course, it is becoming redundant. This is nothing but the printed card ticket. These are not slowly they are vanishing from the system. We are just moving to the other types of system, that is the above three what we have discussed. Apart from that, we have the concession vouchers where the passenger earnings will come. These amounts are either collected in cash or otherwise through various UPIs, IRCTC, credit cards, point of sales, etc. These are the different modes of collecting the cash in lieu of the tickets. So what are all the types of classes we have in the railway system? We have got the first class, AC 2-tier, AC 3-tier, sleeper class, second sitting, then we have the sleeper class we have discussed. All these are all the types of services that we are giving to the passenger, so that he will use any type of the class that is that he wants to travel, and he can avail these facilities. This chair car is also one more there. He can use all these facilities, whichever is convenient to him. So he will buy the ticket using any of these types of services that is offered to him. Okay. Now we will see what are all the other coaching. Other coaching is classified under the head 91. What are all the type of other coaching items? Parcels. Again, in parcels, we are having 4 different types. That is nothing but the luggage rates are there, parcel rates mein, Rajdhani rates are there, premier rates are there, standard rates. Accordingly, the parcels are classified into all these 4 rates. Depending on the services you want, you can avail of all these by having different rates that is booked. Luggage rates, luggage tickets, penalty by TT. Penalty by TT is what? Suppose if you are traveling in a train without proper ticket, or you are traveling short of destinations, you want to extend your journey further, or if you want to not have traveling in first class with the second class ticket, AC 2-tier traveling in AC 2-tier with a normal ticket, all these things are penalty that are levied by the TT in the trains by issuing a excess fare ticket. This is how you are penalized. Then penalty by TCs and stations. In the stations also, what they do is these ticket collectors at the station, if he finds you traveling without an authorized ticket, at that time he will issue a penalty by using an EFT. He will issue the ticket for having been unauthorizedly traveling without proper ticket. This can be either given by the TC. In case of there are no TC in small stations, station master will also act as a TT, and he will TC, and he will also issue you penalty. This HCAD and AV is nothing but the horse carriage dog or animal and bird. Suppose you want to carry your pet animals along with you in train, you need to purchase a ticket, and it will be placed in a separate enclosure near to the guard compartment, and you can carry your pets also with you. This is another type of other coaching earnings. Cloakroom charges तो आपको पता ही है. So whenever you are going out for any visiting any other places or anything, what you do is normally you will deposit your luggage in the cloakroom, and you will go free yourself, and you can wherever to the work spot you have, you finish your work, come back, collect your luggage. For that, you will have to deposit some. You will deposit your luggage for in lieu of some rates that is prescribed. That is nothing but the okay. हिंदी में भी बोलूंगा. तो ये क्या होता है
ये पहले जो आइटम है पार्सल आइटम है। पार्सल आइटम के मतलब 4 तरीके के रेट होते हैं। ये जो है लगेज है, राजधानी और प्रीमियर स्टैंडर्ड, इसके हिसाब से रेट रखा जाता है। तो इसके हिसाब से हम हमारे पार्सल को बुक कर सकते हैं। ये लगेज तो जो है अपने को लगेज गाड़ी के पहले डब्बे में तो आपको लगेज का एक लगेज रूम मिलेगा। वहाँ पर इफ यू आर हैविंग मोर लगेज, अपने को जरूरत से ज्यादा है तो आप लगेज टिकट करवानी है और वहाँ पर लगेज जमा करना है। तो अब जब डेस्टिनेशन स्टेशन रीच होंगे तो आप लगेज वहां पर से उठा करके फिर आप लेंगे। ओके, पेनाल्टी इन बीपीटी और ईएफटी is issued. Okay, in penalty, the penalty is issued in EFT, excess fare ticket only. Okay, we have clarified your chat box also. So HCD we have discussed. HCD मतलब आपके जो है पेट एनिमल्स जो है आपको अगर ले जाना है तो ये HCD या ये एनिमल बर्ड उसको हम बुक करेंगे। क्लोकरूम चार्जेस तो अभी हम वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट कहाँ पर आपको रखना है, वहाँ पर लगेज जमा करेंगे आपका खुद का बैग एंड बैगेज यू विल कीप इट। देन आप क्या करेंगे, किसी काम से निकल करके आपका काम पूरा करने के बाद आपको लगेज आपका जो पर्सनल बैगेज है क्लोक रूम से छुड़ा लेंगे। इसको जो भाड़ा जो आपको बांधना पड़ती है ये होती है क्लोक रूम चार्जेस। वॉरफेज एंड डैमेजेस दैट इज नथिंग बट द वॉरफेज इज नथिंग बट द ग्राउंड रेंट। ओके, one more chat I'm seeing, animal and bird. A and B is nothing but animal and bird. I think I have clarified. Okay. Then wharfage charges are nothing but the ground rent. Suppose किसी सामान को हम रख दिए and we are not able to take it. HCD is horse carriage dog. HCD is horse carriage dog. Okay. That is not there. That is another name for horse carriage dog is animal and birds. So what you do next is wharfage. Wharfage and damage, that is nothing but both are one common item only in coaching. So wharfage is nothing but the ground rent. Suppose you have kept your luggage and you are not removing your luggage within your free time. So any parcel has come and that parcel is kept on on the platform. You are supposed to take out that get that parcel back to your place. So you are not able to do it within the free time. Every item will be given some free time. कुछ को मुफ्त समय दिया जाता है, उसके मुफ्त समय के अंदर हम उसको वहां से छुड़ा करके हम लेकर जाना है। अगर सपोज ये समय से ज्यादा हो गया तो 3 घंटे से ज्यादा या 4 घंटे जो स्टिपुलेटेड टाइम रहता दिया जाता है उसके ऊपर हम जो टाइम लगाएंगे उसके हिसाब से कितना घंटे तक उसका डिले होगा उसका चार्ज लगा जाता है। क्योंकि ग्राउंड उसका जो ग्राउंड रेंट जो है फ्री टाइम के अलावा जो भी परमिसिबल है दैट विल बी लेविड फॉर यू, वो उसको हम पे करते हैं वॉरफेज चार्जेस। स्पेशल ट्रेन जो होता है 2 तरह के होते हैं, एक मिलिट्री स्पेशल और अदर देन मिलिट्री स्पेशल। Military special is that whenever there is any military train that is going for any defense work, that is if there is any problem and we are moving a military train to transport our jawans or other things, for that we will run a special trains military. Whatever is the charges, ये जो charges लगता है military को, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिफेंस डिपार्टमेंट का ऊपर वो अमाउंट जो है हम रेज करेंगे और ये जो होगा बुक एडजस्टमेंट के हिसाब से वो अर्निंग को हमको रेलवे में वो जमा किया जाता है, वो रेलवे का हिसाब में उसका अकाउंट हो जाएगा। अदर देन मिलिट्री स्पेशल मतलब अभी जो है किसी ओके वन मोर चैट आई सी लो साउंड इज कमिंग, हाउ आई डोंट नो। नागेश्वर गाరు, am I audible? Audible. Somebody is saying low sound is coming. I don't know why. What could be? No, I think it is their system settings, sir. Acha, mobile setting, it is audible. Okay, can I proceed? Yeah, yes, sir. So other than military special, मतलब if you are hiring a train for any special purpose, suppose किसी फिल्म का शूटिंग निकालना है या किसी मैरिज के लिए, किसी टूरिस्ट यात्रा के लिए कहीं निकालना है तो आप क्या करेंगे, स्पेशल डिब्बा रिक्वेस्ट करके आप लगवाएंगे। या अगर देर आर मोर देन 500-600 पैसेंजर परफॉर्मिंग एनी tourists or any other occasions, if you are having train for that, a special train will be run. Okay,
So suppose there is a film shoot is there, some trains, some coaches are hired for performing any shooting. So we have seen in the recent time that many Indian films will have some train, किसी न किसी train shooting का कुछ न कुछ ट्रेन में डिब्बा में निकाला जाता है कुछ फिल्म शूटिंग का। वो टाइम में क्या करेंगे, वो कोच हायर कर लेंगे वहां पर के जो है हमको व्हाट वी विल हैव इज देयर स्टोरी एंड अदर थिंग्स विल रन, उनका जो फिल्म शूटिंग वहाँ निकालेंगे, उसके लिए स्पेशल डिब्बे, एनीथिंग इज अरेंज्ड, एनी ट्रेन इज अरेंज्ड, like just we have seen that bullet train, burning train, all those things are there. Any special trains are arranged for any cinema shoot or anything like that. For that special trains are also arranged. For that anything is that they उसके चार्ज के हिसाब से 1 घंटे के इतना चार्ज, 2 घंटे को टैरिफ के हिसाब से हम उसको that charge we have to pay. This is special train. प्लेटफॉर्म टिकट्स तो आपको मालूम है, किसी के लिए आपको सेंड ऑफ करना है, किसी रिश्तेदार को स्टेशन पर भेजना है, तो आपको क्या करना, प्लेटफॉर्म एंटर करें जब आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीदेंगे और वो प्लेटफॉर्म टिकट का जो चार्ज है वो लगाया जाता है. सो यू हैव टू परचेज द टिकट, गो टू द स्टेशन एंड सी ऑफ दैट, एंड व्हाइल कमिंग यू विल हैव टू सरेंडर द टिकट आफ्टर exiting the platform. This is the platform tickets. So these form part of the other coaching. Then cancellation and clerical charges. Cancellation and clerical charges का मतलब सपोज आपने एक रिजर्व टिकट खरीद लिया है एंड निर्णायक दिन में आपको उसका सफर का आपको यात्रा करना है, तो किसी न किसी वजह से आप यू आर नॉट एबल टू, वो जर्नी को आप अंडरटेक नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप सीधा जा करके बुकिंग ऑफिस या रिजर्वेशन ऑफिस में जा करके उसको टिकट्स को कैंसिल करेंगे, तो आपको पूरा फेयर मिलने वाला है नहीं, तो उन्होंने क्या करेंगे, वो उसके लिए कुछ कैंसिलेशन चार्जेस लगाएंगे और उसके पास कुछ कैंसिलेशन का क्लरिकल चार्जेस भी लगाएंगे. मतलब you are making him do first time whatever service is there, it is free of cost. From second time what happens when you are doing at your own instance, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से उन्होंने कैंसिलेशन कर दिया, तो उसके लिए कैंसिलेशन चार्जेस लगा करके और आपको बाकी का पैसे देंगे. सच charges that are levied on confirmed reservation ticket for refunding the amount, some charges are levied. That charges, उस चार्जेस को कैंसिलेशन चार्ज या क्लरिकल चार्जेस करेंगे. इसी आर्टिकल को दैट यू आर स्टोरिंग इन सम रूम ऑफ द रेलवे प्रीमिसेस, उसको स्टोरेज चार्जेस लगाया जाता है. दैट इज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड एज पर द टैरिफ के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो स्टोरेज चार्जेस भी लगाएंगे. ये एक तरीके के अदर कोचिंग अर्निंग है. पोस्टल हॉलेज चार्जेस. व्हाट इज पोस्टल हॉलेज चार्जेस? पोस्टल हॉलेज चार्जेस तो हम हर किसी रेलवे ट्रेन में देखेंगे कि रेलवे मेल सर्विस होता है, वहां पर जो है पोस्टल अथॉरिटीज क्या करेंगे, किसी कोच को दे विल हायर वन कोच एंड देयर दे विल डू ऑल देयर सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. दिस विल बी डन ऑन सम नॉमिनेटेड ट्रेन. एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, सम ऑफ द कोचेस, 1 or 2 coaches are allotted for this purpose. At that time what they will do, they will sort out all the letters. जो डाक जो जाना है उसको वो जर्नी में उसको सॉर्ट आउट करेंगे. वहां पर पोस्टल डिपार्टमेंट इसको, इस व्हीकल का जो चार्जेस है वो भरेगा, वो इसके हिसाब से दैट पोस्टल चार्जेस आर केप्ट फॉर अरेंजिंग. दिस इज प्रीवियसली कॉल्ड द रेलवे मेल सर्विस और RMS. सो दिस इज द, it will be available only on some nominated trains whenever they are seeking a service. This is the postal haulage charges. And miscellaneous मतलब अन्य चार्जेस, ये ऊपर जो हमने ये पॉइंट्स पूरा डिस्कस किया है, अगर किसी में जो भी whatever is not coming covered under this will be covered under the miscellaneous. Am I clear? Shall we go ahead? Any doubts इसमें? Sir, Or any- can I unmute or can I ask them to raise? Okay, their- shall I, otherwise you can, in the last also I will clarify. Yeah, as you wish, sir. Okay. Yeah. Thank you. Somebody said go ahead. Okay, right. Yeah. Now we have discussed these passenger and other coaching. Next, what is the other item that we are going to discuss will be about the goods. That is nothing but माल. Goods earnings. A goods earning जो है abstract Y 92 में बनता है. ये फ्राइट कलेक्टेड और मूवमेंट ऑफ गुड्स, मालगाड़ी का जो मूवमेंट होगा उसमें हम भाड़ा कलेक्ट करेंगे. तो दिस इज नथिंग बट द फ्राइट. अमाउंट कलेक्टेड ऑन वॉरफेज एंड डैमरेज. ये वॉरफेज और डैमरेज चार्जेस जो होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये वॉरफेज चार्जेस आर चार्जेस दैट आर लेविड, दैट इज नथिंग बट द ग्राउंड रेंट फॉर द टाइम टेकन टू रिमूव ए आइटम बियॉन्ड द फ्री टाइम अलाउड. अगर रेलवे के प्रीमिसेस से हम हमारा जो माल नहीं निकालेंगे उसको
फ्री टाइम के से भी ज्यादा हम लगाएंगे तो उसे वॉरफेज चार्जेस बोलेंगे। डैमरेज चार्जेस क्या होता है? द अमाउंट कलेक्टेड either at the time of loading or unloading at the destination station or at the forwarding station, either by the consignor or by the consignee. This is nothing but beyond the free time allowed. सभी माल के लिए कुछ फ्री टाइम लगाया जाता है। फ्री टाइम के अंदर हम लोडिंग करना है या अनलोडिंग करना है। ये जो होता है फॉरवर्डिंग स्टेशन, कौन सा स्टेशन में हम जमा कर रहे हैं, कौन सा स्टेशन से हम हमारा माल उठा रहे हैं। ये स्टेशन आइदर बाय द कंसेनर, अगर कंसेनर तो हम किसी कोई बुक कर रहा है, और क्या एनीबडी इज रिसीविंग दैट, इट इज डन, द चार्जेस कैन बी कलेक्टेड बाय एनी ऑफ देम, दैट इज damage charges are charges that are levied for not lifting the consignment at the time of loading or unloading, or at the originating station or at the destination station, either by the consignor or by the consignee, beyond the free time allowed. This is the damage charges. Free time के से भी ज्यादा टाइम लगाने से, एक्सेस करने से उसका चार्जेस लगाया जाता है, उसका टैरिफ रेट्स दिया जाता है, ईयर टू ईयर इसका चेंजेस होता है। सो उसके हिसाब से हम डैमेज चार्जेस हम पार्टी से कलेक्ट करेंगे। दिस इज नथिंग बट मेकिंग अवेलेबल द रूम फॉर लोडिंग अदर लगेज, अदर items. So if you don't remove, what happens? It will be difficult for others to load or unload their consignment. So what we do is we leave these damage charges to see that the space is available at any given point of time for performing the loading and unloading activities. Punitive charges for overloading. इसका मतलब क्या होता है? Punitive charges मतलब जब भी हम हमारा weight declare करेंगे goods में ले जाने के लिए, so we are declaring that goods. So at that time we also declare what is the description of goods, what is the load, what is the weight of that. Suppose what happens at the time of loading in the wagon, suppose one wagon permits around 25 tons, suppose for example, suppose you are overloading that wagon with more, what happens? More overload करने से आपको one thing what happens is the speed of the train will come down. There will be heavy because of the movement of the goods, the tracks and other things, your PA material, everything will go for a toss. So what happens? There will be the axle and brake over, there will be a lot of pressure. So what happens, and moreover, whatever earnings you are supposed to get to the actual weight, you are actually loading more than your required weight. So at that time, this because all these losses will happen. So in order to see that the correct load is put to the correct wagon, so if there is any excess load is there, some punitive charges are collected. That means the wagon is taken, it is again loaded, and if it is more than the desired weight, then the amount is collected from the consignor whomsoever is loading. This is nothing but the punitive charges. WDRF amount forfeited. WDRF money, wagon demand registration fees. So whenever you are booking a wagon at the time of loading, what happens is first you have to book a wagon. At the time of booking a wagon जो book करेंगे हम, उसके लिए पहला एक wagon demand registration fees we have to pay. So once you have paid that wagon demand registration fees, it is entered in a register called the priority register. Priority register में हम इसको enter करेंगे। करने के बाद जब भी उसका मौका, whenever the time comes for allotment, we will call the consignor and ask him to load that wagon. Suppose if he is loading the consignment within the as on when he is called for, the amount of freight whatever he is paying, that amount, the wagon demand registration fees amount will be adjusted against the freight. Suppose due to some circumstances he is not able to load the freight, माना समझो वो टाइम के अंदर जब आप उसको उनको बुला लिया और माल आप लोड करने के लिए बोला है, तो उन्होंने वो लोड नहीं कर पाया वो निर्धारित समय के अंदर, तो क्या होगा? उसको अमाउंट वो क्या करेगा? बोलेगा मैं कुछ न कुछ वजह से मैं लोड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को कुछ दिक्कत है लाने में मेरा माल वहां से यहाँ तक. So at that time, whatever wagon demand he has paid by booking that amount will be forfeited. मतलब उसको वो छोड़ना पड़ेगा. वो अमाउंट जो कलेक्ट होता है इसको बोलते हैं WDRF अमाउंट forfeited. ये जो होता है that will be a part of your goods earnings. Goods earning के हिसाब से उसका earning होता है. वो जो वैगन उसको जो लोड नहीं कर पाएगा, जो अगले जो लाइन में है उसको नेक्स्ट पर्सन को उसको they will make it available. This is how this WDRF will work. Last we are coming to the siding charges. किसी साइडिंग जो हो सर्विंग स्टेशन से किसी साइडिंग हो गया, जैसा
फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का शेडिंग हो गया, नहीं तो ऑयल कंपनी का कुछ शेडिंग हो गया, नहीं तो कुछ कोल शेडिंग हो गया, समझो उसका शेडिंग चार्जेस जो लगता है वो उसके हिसाब से शेडिंग चार्जेस लगाएंगे। ये शंटिंग जो होता है इंजन का शंटिंग चार्जेस, क्रेन चार्जेस, किसी हमारा क्रेन उनका साइडिंग में जा करके किसी ने कुछ काम किया है उसका ट्रिप, उसका क्रेन चार्जेस होगा, वो जितना ट्रिप लगाए वो ट्रिप चार्जेस होगा। किसी वैगन का डिटेंशन हो गया, मानो उन्होंने लेट अनलोडिंग कर दिया या लोडिंग कर दिया, जो वैगन आपको तो चलते ही रहना चाहिए ना आपका वैगन, सो आपका वैगन को कोई रोक करके बहुत देर नहीं लगा सकते, तो इसके लिए जो बियॉन्ड द फ्री टाइम जो भी डिटेंशन होगा वो डिटेंशन चार्जेस लगाएंगे, और स्टेबलिंग चार्जेस, वे ब्रिज चेस्टिंग चार्जेस, दीज आर ऑल दी मिसलेनियस अर्निंग्स फ्रॉम द ऑफ द गुड्स अर्निंग्स के हिसाब से होगा। दिस इज दी अबाउट द गुड्स अर्निंग। व्हाट आर ऑल द कमोडिटीज वी कैरी जनरली इन गुड्स? गुड्स में जो होता है कोल, कोयला, देन what will happen, cement, then dhana, rice, food grains, fertilizers and chemicals, then petrol, oil, lubricants, then we have got steel, raw material for steel plants, then we have iron ore, then we have container corporation, Concor का जो ये करेंगे container that we carry. One more thing I am seeing, stabling charges is nothing but the wagons when they are stabled on their line. So beyond that time, you have to get your wagons removed from your siding. So if it is more time is taken, then the beyond that time, the stabling charges will be levied for non removal of the wagon from that particular place. This is nothing but stabling. For more than the time, free time allowed, if you are trying to keep your wagon at more time beyond the permissible, then the charges are levied as stabling charges. Okay. These are the different type of goods earnings, and we know the commodities that primarily we are carrying is coal, cement, then iron ore, raw material for steel, food grains, chemical and manures, container corporation, and POL, मतलब petrol, oil, lubricant या compressed natural gas. And इसके अलावा whatever is the other things is called the others. Other goods will do not fall. These are the main commodities where we get the goods earning. If we see the latest statistics of the year 2020-21, हमारा जो टोटल कुल कमाई में 65% जो है earnings goods से आता है, 29% of the earnings will come from कोचिंग, एंड बाकी का 3% सन्ड्री और अदर कोचिंग में आता है। मतलब इसका क्या है, गुड्स अर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कमाई। इसे वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स का जो है गुड्स के हिसाब से जो भी माल गाड़ी से जो भी हमको भाड़ा मिलता है, उसके जो कमाई मिलता है वो 65%, मतलब एक पूरा आपका जो अर्निंग में 65% का भाग नहीं पाता है। सो गुड्स अर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट गुड्स अर्निंग total this thing collection will our earnings will be very less, so we cannot manage. So goods earning nothing but the bread and butter, जो हमारे जो bread and butter जो होता है, हमारा जो हमारे सैलरी जो है, हमारा अन्य जो भी हमको मेंटेन करना है रेलवे एसेट्स के लिए, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा तक गुड्स अर्निंग से आता है। सो इसको हम ज़्यादा तक इम्पोर्टेंस देंगे, और इसका we will see that the earnings will not fall down. Okay, next will be the सन्ड्री अर्निंग। सन्ड्री अर्निंग मतलब अन्य। सो हमने पहले 3 वी हैव डिस्कस्ड, पैसेंजर अर्निंग्स हमने डिस्कस कर लिया है, अदर कोचिंग कर लिया है, और गुड्स भी कर लिया है। अभी सन्ड्री अर्निंग जो है एब्स्ट्रैक्ट XZ में क्या क्या है 93, इसमें क्या है, व्हाट आर ऑल द आइटम्स, रेंट टोल्स फ्रॉम रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हमने पूरा आइटम्स का लिस्ट कर दिया है। हमको एक एक करके आपको पढ़ के हम सुनाएंगे कहाँ कहाँ से ये अन्य मतलब सन्ड्री अर्निंग्स आ सकता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, रिटायरिंग रूम्स, रेस्ट हाउस, लीज ऑफ लैंड, हमारा जो लैंड होता है या बिल्डिंग, अदर पर्पस, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लैंड, वर्टिकल लीजिंग ऑफ बिल्डिंग स्पेस, एयर स्पेस, ऑप्टिक फाइबर, वेल्यू फैसिलिटीज, पार्किंग लॉट्स जो है, पार्किंग लॉट जो है साइकिल और स्कूटर स्टैंड होता है, हम स्टेशन के पास उसको रखते हैं, उससे जो भी हमको किराया मिलता है वो सन्ड्री अर्निंग्स में जाता है। कमर्शियल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंडर में जो भी लैंड है उसका कमर्शियल लीजिंग बोलते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास जो भी है उसका जो
लीज या लाइसेंसिंग होते हैं, उसे इंजीनियरिंग प्लॉट्स करते बोलते हैं। इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस फॉर प्राइवेट सेटिंग, प्राइवेट सेटिंग्स जो है उसका इंटरेस्ट एंड IMN चार्जेस जो होता है उसका भी हम सन्ड्री अर्निंग्स के अंदर उसका हम रियलाइज करेंगे। कैटरिंग में क्या होता है, डाइनिंग कार्स, लाइसेंस फीस, IRCTC का कॉलेज और पैंट्री कार्स, हमारा पैंट्री कार्स जो है वो कॉलेज करेंगे तो उसका चार्ज लगाएगा। डिपॉजिट वर्क्स, आउटसाइडर्स, किसी अन्य लोगों के, बाहर के लोगों के हम जो भी काम करेंगे वर्कशॉप में, वो जो होता है डिपॉजिट वर्क में होता है, वो करेंगे। एडवर्टाइजमेंट थ्रू होर्डिंग, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स, डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, वो जो है एडवर्टाइजमेंट्स होता है, वो होर्डिंग होता है। और एडवर्टाइजमेंट इन ट्रेन्स में जो एडवर्टाइजमेंट आता है ट्रेन के अंदर या ट्रेन के बाहर, ब्रिजेस के ऊपर, ATMs जो लगा जाता है, डिजिटल कंटेंट ट्रेन में जो डिजिटल चलती है उसका, ट्रेन प्लेटफॉर्म में, मोबाइल एसेट्स जो है ट्रेन में जो हमारा एसेट्स जो भी जाता है कोचिंग में, अंदर पे जो भी डिस्प्ले होगा वो पॉलीविनाइल और व्हाट एवर इज दैट एडवर्टाइजमेंट दैट इज देयर इनसाइड द ट्रेन। पब्लिसिटी, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप स्टेशन के बाहर जो भी आपको बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट या कुछ बैनर या कुछ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स दिखेगा, साइन बोर्ड्स, ग्लो साइन बोर्ड्स, वो पूरा सन्ड्री अर्निंग्स में आता है। इसको हम बोलते हैं NFR, मतलब नॉन फेयर रेवेन्यू, मतलब गैर किराया राजस्व। तो ये जो आइटम है अभी लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, इसकी प्रामुख्यता ज़्यादा तक दी जा रही है, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत कैश, मतलब बहुत धन या कमाई उपलब्ध होने का आशा है। अगर इसमें जो हो गया और एडवर्टाइजमेंट इन ट्रेन्स, ब्रिजेस, डिजिटल कंटेंट, इसके ऊपर ज़्यादा अभी कंसंट्रेशन किया जा रहा है, ताकि यहाँ से हमको सन्ड्री अर्निंग्स ज़्यादा तक मिले। इस बार हमने बजट में 10,000 crore का सन्ड्री अर्निंग लगाया, ज़्यादा तक ज़्यादा इसी एरिया से जो है हम गैर किराया राजस्व से ज़्यादा अर्निंग्स हम इसको अब वी आर ट्राइंग टू मोबिलाइज, ट्राइंग टू गेट अर्निंग्स आउट ऑफ दिस थिंग नाउ। एडवर्टाइजमेंट थ्रू इंटरनेट एंड बुकिंग साइट्स के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट्स होगा उसका, और मिसलेनियस जो अन्य होगा, डाइट चार्जेस, जो हॉस्पिटल में हम भर्ती गए तो हमारे लिए कुछ डाइट दिया जाता है, उसका डाइट चार्जेस, RELSS चार्जेस, RELSS माने रेलवे एम्प्लॉयज लेबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, वो जो है हम रिटायर होने टाइम के जब उसमें थोड़ा अमाउंट काटा जाता है, दैट इज फॉर योर हेल्थ स्कीम के वास्ते वो जो है जाता है। और सन्ड्री अदर सन्ड्री अर्निंग्स, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लैपटॉप्स, पुराना लैपटॉप सरेंडर करेंगे तो उसका रेजिडुअल वैल्यू बनना पड़ेगा, नया लैपटॉप लेने जब लेंगे, या वॉट एवर इज ओल्ड एट द टाइम ऑफ लैपटॉप, वॉट एवर इज देयर, दैट वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यूज, refunds from rents and tolls and other sundry deposits. These are all the main items of the sundry. Importance is being given to this advertisement in train. These are very important. ये ब्रिजेस जो होता है ये भी एक गैर किराया राजस्व के अंदर, दिस न्यू पॉलिसी दैट दे हैव डेवलप्ड, दे आर टारगेटिंग, इसके अंदर से जो भी हमको रेवेन्यू मिलता है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। अगले 5 या 10 साल के अंदर 15,000 करोड़ का यहाँ से कमाई उपलब्ध होने का कुछ आशा है, इसके ऊपर ज्यादा टच दे रहा है। दिस इज नथिंग बट दी गैर किराया राजस्व, दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर सन्ड्री अर्निंग्स। तो हमने 4 अर्निंग्स का अभी हम डिस्कस कर लिया है, तो ये हो गया हमारे पहले स्लाइड में हमने कवर किया था इसमें। तो हम बोलिए पैसेंजर अर्निंग्स हो गया है, अदर कोचिंग, गुड्स अर्निंग्स, सन्ड्रीज, ये जब चारों को टोटल करेंगे तो ये हो गया हमको कुल कमाई, ग्रॉस अर्निंग्स। नाउ वी विल गो इनटू द ट्रैफिक बुक। तो हम ट्रैफिक बुक का यातायात कमाई के बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हमने नाउ वी हैव लर्न दैट व्हाट आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग्स, नाउ वी हैव टू अकाउंट देम, इसको हिसाब में लाना है। इसको हिसाब में किसी तरह से लाएंगे हम, ट्रैफिक बुक के माध्यम इसको हम लाएंगे। तो ट्रैफिक बुक का डेफिनेशन जो होता है हम अभी यहाँ पर उसके एक बार हम ट्रैफिक बुक का डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। ट्रैफिक बुक इज कंपाइल्ड इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन चैप्टर 32 ऑफ अकाउंट्स कोड पार्ट 2। अकाउंट्स कोड जो पीला जो पिंक बुक होता है, पिंक कलर में होता है, उसे पार्ट 2 बुक में चैप्टर 32 के हिसाब से इसको हम कंपाइल करेंगे, इसका हिसाब लगाएंगे। हाउ इट इज कंपाइल्ड, आपकी सुविधा के लिए हमने जो है पूरे ट्रैफिक बुक का डेफिनेशन को स्प्लिट करके हमने पॉइंट के हिसाब से दिया है। इसको जो है हम डिफाइन कर लेते हैं। इट करेक्ट्स एंड ब्रिंग्स इनटू, मैं हिंदी में भी बोलूंगा इसको,
collects and brings into account coaching, goods and sundry other accounts, the whole of traffic earnings, both local and foreign, accounted at the station or otherwise. It records the realization of earnings of traffic apportioned with other railways and watches the progress in settlement of balances on this account. So traffic book is a compilation which collects and brings into account coaching, goods and sundry, the whole of traffic earnings, both local and foreign, whether accounted at the station or otherwise. It records the realization of earnings of traffic interchange with other railways and watches the progress in the settlement of balances on this account. ये मतलब क्या है? कलेक्ट्स एंड ब्रिंग्स इनटू अकाउंट। क्या करता है? इसको कलेक्ट करता है, हिसाब में लेके आता है, क्या क्या लेके आता है, कोचिंग कमाई, गुड्स कमाई, सन्ड्री कमाई, कहाँ पर से, बोथ लोकल एंड फॉरेन, ट्रैफिक अर्निंग्स ऑफ बोथ लोकल माने अपने रेलवे में जो बनता है कमाई उसका, और अन्य रेलवे में जो अन्य रेलवे को समझो आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना है, यहाँ से आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना है, तो क्या होता है उसमें जो एक या अन्य रेलवे का जो अपने हमको उस यात्रा के बीच में हमको एक या दो रेलवे के माध्यम हमको वहां जाना पड़ता है, तो क्या हो गया? ये जो हो गया दूसरा रेलवे हो गया, उसको बोलते हैं फॉरेन रेलवे। तो यहाँ पर जो अर्निंग्स लोकल का भी होता है, फॉरेन का भी होता है। स्टेशन में भी कलेक्ट किया जा सकता है या स्टेशन के बाहर। स्टेशन के बाहर मतलब हमको टिकट, ई टिकटिंग या हमको IRCTC के माध्यम जो भी हम टिकट्स बुक करेंगे वो स्टेशन के अलावा बाहर की जगह में भी कलेक्ट होता है। इट रिकॉर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स। ये क्या होता है? इसका रियलाइजेशन का हिसाब लगाता है। और ट्रैफिक इंटरचेंज, एक या अन्य रेलवे के बीच में जो भी ट्रैफिक होता है उसका भी हिसाब लगाता है, क्योंकि हमारे रेलवे में जितना कमाई हो गया, लेकिन दूसरा रेलवे को तो हम दूसरा रेलवे में जा करके हम उतर रहे हैं। हमारा समझो आपने यात्रा यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता तक किया है, तो उसमें हावड़ा तक किया है, तो उसमें क्या होता है? आपने दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे में जो आपको शेयर होगा और मिलेगा, और दूसरे रेलवे में जाने का जो है उसको वो रेलवे को हम उसको सरेंडर कर देंगे। सो ये जो होता है अपॉर्चुनिटी, इसका भी हिसाब ट्रैफिक बुक लगाता है। इसे 4 पार्ट्स में इसको बांटा जाता है। क्या क्या होता है? पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज स्टेशन अकाउंट, सेकेंड पार्ट इज एडजस्टमेंट विद अदर रेलवेज, थर्ड इज लेजर अकाउंट ऑफ द होम रेलवे, डी इज अब्स्ट्रैक्ट ऑफ अर्निंग्स एंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस। सो अभी हम ट्रैफिक बुक का डेफिनेशन हमने इसका डेफिनेशन देखा है। सो वी विल रिपीट वंस अगेन। ट्रैफिक बुक इज कंपाइल्ड एज पर चैप्टर 32 ऑफ अकाउंट्स कोड। अब आपको ये लिखना ही होगा। ट्रैफिक बुक में बारे में आपको एग्जाम में पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि पहला ट्रैफिक बुक चैप्टर 32 अकाउंट्स कोड पार्ट 2 के हिसाब से इसका जो है कंपाइलेशन होगा। हाउ इट इज कंपाइल्ड? इट इज कंपाइल्ड मतलब इसका डेफिनेशन देना पड़ेगा। इट कलेक्ट्स एंड ब्रिंग्स इनटू अकाउंट coaching, goods, sundry and other accounts, the whole of traffic earnings, both local and foreign, accounted at the station or otherwise. It records the realization of earnings apportioned with other railways and watches the progressive settlement of balances on these accounts. It consists of 4 parts. Station account, adjustment with other railways, is calling apportionment, a division sheet, then ledger account of the home railway, abstract of earning and statement of balances. तो अभी नेक्स्ट स्टेज होगा, हम एक एक पार्ट के बारे में अभी इसका डिस्कस करेंगे। पार्ट ये क्या होता है? स्टेशन अकाउंट्स। स्टेशन अकाउंट्स जो है कोचिंग, मतलब ये पैसेंजर एंड अदर कोचिंग एंड गुड्स के लिए सेपरेट अलग अलग तरीके से इसको बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? ये बैलेंस शीट्स आता है स्टेशन से। स्टेशन क्या करेंगे? हर महीना ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस को बैलेंस शीट, दे विल सेंड बैलेंस शीट। इनके बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट जो है ऑल अक्रूवल्स विल बी डेबिट and all realizations will be credit. So credit debit साइड में क्या होता है? all उपार्जित कमाई पूरा डेबिट साइड में होगा, और कैश हो जो बिलेबल और नॉन बिलेबल वोचर से वो क्रेडिट साइड में होगा। तो हमको इसका कैश मिलता है इसकी अर्निंग्स के हिसाब से। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पिछले महीने के जो क्लोजिंग बैलेंस ये महीने का प्रारंभिक जमा होता है। सो आइटम्स नॉट पासिंग थ्रू स्टेशन बैलेंस, आइटम्स सच एज स्टेशन बैलेंस शीट में जो पास नहीं होता, कैरेज बिल्स। कैरेज बिल्स का मतलब क्या है? जो वोचर्स होते हैं, कौन से वोचर्स होते हैं? M&M वोचर्स होते हैं, पुलिस वारंट्स होते हैं, जो कैश इन ल्यू ऑफ कैश दे विल एक्सचेंज, टोटल कैश के बदले में कुछ कंसेशन वोचर्स एक्सचेंज किया जाता है। दैट विल बी नथिंग बट द कैरेज बिल्स। इसका जो है वोचर डिफरेंस, मतलब वो वोचर को जो है हम चेक करके उसको एक वी विल गिव वन रेट फॉर दैट, फॉर 100 वोचर्स so and so is collected. That also we will take it along with that also will be included in the part A. अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट, अनुमानित बैलेंस शीट का मतलब क्या है? सपोज बैलेंस शीट सही
टाइम से हमको स्टेशन से नहीं पहुंचा, तो लेकिन उस मंथ का हम वी हैव टू मेक उसका हिसाब लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अनुमानित बैलेंस शीट तैयार करेंगे और अनुमानित बैलेंस शीट के साथ आगे बढ़कर उस महीने का हिसाब लगाते हैं। ये नेक्स्ट मंथ अगले महीने जो होगा उसका एक्चुअल बैलेंस शीट आएगा, तो इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो मिस्टेक्स इसमें जो भी अप्रॉक्सीमेट बैलेंस शीट में जो भी मिस्टेक्स या उसका एडजस्टमेंट करना है, उसको नेक्स्ट मंथ में हम उसको एडजस्टमेंट मतलब समायोजन बैलेंस शीट बना करके इसका सही हिसाब हम लगाने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा भी ये। तो जब अनुमानित लगाएंगे तो जब आपको एक्चुअल आ गया तो एक्चुअल माइनस अप्रॉक्सीमेट will give the amount to be adjusted. So this we can adjust in our RTA station accounts. Closing balance represent unrealized earning. जो संपत्ति के समय में जो कमाई हमको उपलब्ध नहीं हो, मतलब इसका कमाई हमको प्राप्त नहीं हो, उसको जो है क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो अगले महीने जा करके ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो इसके हिसाब से व्हाट एवर आइटम्स है इसको हम रिलीज करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसका टोटल सम लगाते हैं और इसको सीधा लेकर के पार्ट सी में हम चले जाते हैं। अभी पार्ट बी का हम डिस्कस करेंगे। ये जो है आपको एक नमूना बैलेंस शीट का हमने लगाया है। हाँ बोलोगे, मैं क्लास में हूँ, बोल रहा हूँ क्लास अच्छा से। अच्छा हाँ 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 हाँ, that we have to include that, yes. Okay. We have to accept that. We have to accept करना पड़ता है इसको. Every time it is regular debit. Okay, sorry, there was a small interruption. Okay, somebody else. ये बैलेंस शीट का somebody has raised a hand. Yes, please unmute. राजू साहब बोलिए, or you want it in the end? So please tell me. Somebody is raised a hand. Can we Yeah. attend to him? He is having... Yes, sir. And now he's lowered the hand, sir. Sir, please unmute. Okay, shall I go ahead? Yes, sir. Okay. Now I have put one balance sheet example. कोचिंग के लिए एक नमूना हमने इसमें शेयर किया है आपके साथ। इसमें जो है what are all the items? First will be the sundry items, deposit sundries. These deposit sundries will have to be refunded once we are taking the actual realized amount, and the balance has to be given back after some time. This is only a deposit amount. The passenger local, luggage, parcel local, and other traffic, other yatayat. Passenger foreign means the foreign tickets issued for other railways, whatever is the amount that is collected. This is given division wise, इसका compilation होता है और उसका total यहाँ पर है. And parcel foreign opening balance, पिछले महीने का closing balance will become this month's opening balance. Main sundries, sundry item station के द्वारा जो भी sundry items आता है वो उसका amount is given. The total is the is given here. This is on the debit side. On the credit side, for this total we are having this much cash, this much of military M&M vouchers, other vouchers,
balance sheet refunds, whatever is there by way of cancellation of ticket, whatever is there that we have given. Closing balance is this much. Any value refunds that we are making from this, that value we are taking as credit, and any other GST and other components are also included in this. So this is the example of coaching balance sheet. So we'll go to the next slide. Here, what are all the items of coaching? I have discussed for easy आपको समझने के लिए दे दिया था क्या क्या होता है. Security deposit, VDR principal deposit होता है deposit sundry में. Then passenger is local traffic within the railway. Whatever is traffic is booked is the local traffic. Whatever luggage and other things by TT, TCs, this is the unbooked luggage. Whatever is there will come in the luggage. Other traffic, all other coaching earnings other than parcel and luggage. Parcel, local parcel traffic foreign, GSTs वो taxes जो correct करेंगे वो book section को हमें advise करना है. Main sundries, what are all there? These ID cards, timetables, excess booking, other sundries, sale of grass, etc. All those things will form main sundries. Credit items will comprise of cash, RMC bills, M&M bills, refund of tickets, etc. All those things will form the credit items. So you go through this slide even after going home, then you can know what are all the items. You also refer to this also, then you will understand what are the items that are taken on the debit and credit side of the coaching. Now we will go to the goods. Goods में क्या क्या होता है? Goods local होता है माल में, उसका balance sheet बनता है अलग. Wharfage and storage charges हमने discuss किया है, demurrage discuss किया है, sundries जो है local जो earnings होता है, all those things. Then outward paid foreign, what is that foreign? other दूसरा रेलवे में जो माल जाता है उसका हिसाब, all those things, GST and other taxes, and this will be your deposit DMT. Whatever is the deposit that you have to pay will be refunded at later, whatever is there through special credits. So these are all the items that I have given in the cash, bills, balance sheet transfers, etc. All those things, this debit and credit side will be carried. This is an example of the goods balance sheet. What are the debit items? Again, I have given separately for your understanding के लिए दिया है. So these goods, sundries, all those things, GSTs, OB, lump sum deposit, excess in the, all these form part of the OB. Credit items will have cash, bills, RMC, other vouchers. That means station pay orders, balance sheets, all these station outstandings will form closing balance. Deposit refund will be WDRF, whatever wagon registration fees is there, that is have to be refunded if there is any claim. And special credits, whatever is special credit is given by TA, etc. All those ones will form part of the special credit. This is how the debit and credit items of goods will come out. Apportionment, ये जो है part B है. The earnings of a company. Now these earnings from traffic carried over 2 or more railways are to be shared by the only one railway will actually collect the money. इसका जो है apportion मतलब विभाजित. अभी 2 या अन्य रेलवे के बीच में जो कमाई होता है उसको हम शेयर करते हैं. एक रेलवे जो है कलेक्ट करता है, दूसरा रेलवे जो है उसको के साथ उसको बांटा जाता है. What are all the ticket? Only through traffic. इसका जो विभाजित के इसका विभाजन का जो है इसका हमने प्रोसीजर हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है. In case of through traffic, even though the traffic is carried by more than one railway, 2 या अन्य रेलवे तक हम यातायात जब माल ले करके जाएंगे, एक ही टिकट बनता है. वो एक ही टिकट में from to station लिखा जाता है, and whatever is the station to where it is carried over more than one railway, that will be issued by only one ticket and it will be shared. After the internal check of RR मतलब रेलवे रिसीट का जो इंटरनल चेक होने के बाद इसका विभाजित किया जाता है. पोर्शन अमंग द रेलवेज, जो भी रेलवेज इसमें इस ट्रांजैक्शन में आएंगे उसके बीच में इसका जो है बांटा जाता है. व्हाटएवर सेटलमेंट ऑफ ट्रैफिक ट्रांजैक्शन, आपस में लेन देन जो है मंथली बेसिस में नेट रिजल्ट एडवाइस शुद्ध परिणाम की घोषणा के द्वारा होता है. ओके, दिस स्लाइड आई एम एनीवे शेयरिंग, यू कैन आल्सो गो लीजरली एंड यू कैन आल्सो चेक अप. ఇగో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తింటున్నా. హలో ఈ అమ్మాయి హలో Please carry on. Something has come. Period of completion of accounts and for the settlement among railways of through traffic transaction is done after the completion. एक कैलेंडर महीने के बाद इसका जो है settlement will happen.
The closure of accounts will signify that apportionment is completed. अब accounts का हिसाब खत्म होने से apportionment विभाजित पूरी तरह से संपूर्ण, इसका जो घोषणा होता है महीने के लास्ट में, मतलब महीने खत्म होते कि इसका जब घोषणा हो जाएगा तो क्लोजर ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा. एनी वाद, एनी विवाद, एनी डिस्प्यूट्स, एनी गलती, कुछ विसंगति और एनीथिंग, एनी कुछ भी सॉर्ट, इसका क्रमबद्ध क्या करेंगे अगले महीने में करेंगे. इसको जो है हम मेंटेन किया, इसमें करेंगे फॉर्म 3219 ऑफ फॉर कोचिंग एंड 83220 फॉर गुड्स ट्रैफिक के हिसाब से हम इसको अपॉर्शनमेंट का वो बनाएंगे. दिस इज अबाउट द अपॉर्शनमेंट. दिस इज नथिंग बट द पार्ट बी. सो वंस पार्ट बी का आपको जो यहाँ का नेट रिजल्ट आएगा, यहाँ का नेट रिजल्ट शुद्ध परिणाम की घोषणा आएगा, तो हम क्या करेंगे नेट रिजल्ट एडवाइस बनाएंगे. सो रिजल्ट्स ऑफ अपॉर्शनमेंट का इसका जो नियम है, रिजल्ट्स ऑफ अपॉर्शन इज डन फॉर थ्रू ट्रैफिक ओनली बिटवीन होम रेलवे एंड फॉरेन रेलवे. अपने रेलवे या अन्य रेलवे के पास के बीच में जो भी ट्रैफिक होता है उसका ही विभाजन किया जाता है. लोकल ट्रैफिक को हम विल नॉट डू एनी अपॉर्चुनिटी, इसका विभाजित नहीं करेंगे. ये जो बनाएंगे हम सेपरेटली फॉर कोचिंग एंड गुड्स. लोकल ट्रैफिक इज रिटेन बाय होम रेलवेज. फॉरेन ट्रैफिक इज अपॉर्शन विद अदर रेलवे. फॉरेन ट्रैफिक जो है दूसरे रेलवे से उसी को ही हम विभाजित करेंगे, अपॉर्शन करेंगे. लोकल ट्रैफिक को हम नहीं करेंगे, वो हमारे होम रेलवे माने अपने घरेलू रेलवे में इसका हिसाब रखा जाता है. एक्सेस फेयर लगेज एंड अदर ट्रैफिक इज रिटेन बाय होम रेलवे. एक्सेस फेयर जो है EFT में जो टिकट होगा, लगेज का टिकट होगा, अदर ट्रैफिक का जो होगा वो जो है हमारे घरेलू रेलवे, हमारे होम रेलवे में इसका रखेंगे. पोस्टिंग ऑफ पार्ट बी इज डन फ्रॉम नेट रिजल्ट. मतलब यहाँ पर हम देखा था शुद्ध परिणाम की घोषणा, यहाँ जो क्या हो गया इसका जो है ये नेट रिजल्ट एडवाइस, इसके हिसाब से हम इसका वहां से पोस्टिंग करेंगे पार्ट बी का, और इसका जो टोटल हम पार्ट बी का टोटल करेंगे और इसको हम ले जाएंगे पार्ट सी में. ये अपॉर्चनमेंट का हमने एक ग्राफ बना दिया है. इसी तरह से होगा जब रेलवे की जो पूरी होती है विभाजन, इसका हिसाब से हम एक ग्राफिकल चार्ट आपको सामने रख दिया. इस तरह से विभाजित करके अपना अपना जो शेयर है वो पार्ट बी में के द्वारा हम अपना रेलवे को अपने पास इसका कमाई को रखेंगे. पार्ट सी. वंस पार्ट ए एंड पार्ट बी इज ओवर. हमने पार्ट ए में सीखा था कि हम पार्ट सी को टोटल लाएंगे, पार्ट बी को भी पार्ट सी के अंदर लाएंगे. पार्ट सी जो होता है लेडजर अकाउंट ऑफ द होम रेलवे, बाही खाता, इसको बोलेंगे हिंदी में बाही खाता. ये जो बनाते हैं हम कोचिंग के लिए बनाएंगे और गुड्स के लिए भी अलग से बनाएंगे. इट डील्स विद ट्रैफिक अकाउंट्स एंड अदर रेलवे. ट्रैफिक अकाउंट्स या यातायात लेखा विभाग या अन्य रेलवे के बीच में इसका जो ट्रांजैक्शन होता है. ये पार्ट ए एंड पार्ट बी का हम नेट ओनली हम लाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे. समायोजन खाता जो भी एडजस्टमेंट अकाउंट होगा उसका एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे. AOB माने अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट, इसको भी हम पिछले महीने का AOB को भी हम इधर फॉरवर्ड करेंगे अकाउंट को. इंटर रेलवे और इंट्रा रेलवे ई-रिकॉन के माध्यम जो भी एडजस्टमेंट होगा, लेन देन का डेबिट्स जो होगा, जैसे डाइवर्शन डेबिट्स वगैरह वगैरह जो होगा, उसमें भी व्हाट एवर एडजस्टमेंट इज देयर. मतलब पार्ट सी का मतलब क्या है, जो भी एडजस्टमेंट होम रेलवे अपने घरेलू रेलवे में इसका बाही खाता होगा वो सब पार्ट सी में किया जाता है, सभी एडजस्टमेंट्स. और जो होता है बैलेंस शीट ट्रांसफर, मतलब अगर पैसेंजर का अगर एक स्टेशन में पैसेंजर भी होगा और गुड्स भी होगा, अगर सपोज पैसेंजर का हिसाब गुड्स में रख दिया या गुड्स का हिसाब पैसेंजर में कर दिया, तो इंटरनल एडजस्टमेंट्स पैसेंजर और गुड्स के बीच में वो भी जो है पार्ट सी के द्वारा इसका भी हम इसको भी सॉल्व करेंगे. इसका भी हम ट्रांसफर करके इसका एडजस्टमेंट, मतलब सही अर्निंग्स पैसेंजर का पैसेंजर में ही रहेगा, गुड्स का गुड्स में. अगर इसमें कुछ इंटरचेंज हो गया स्टेशन के हिसाब से, उस गलती को भी हम सुधार करके पार्ट सी में इसका हम हिसाब बराबर लगाएंगे. सन्ड्री अर्निंग फ्रॉम अदर अकाउंटिंग यूनिट्स, ई-रिकॉन एक्सेट्रा. ई-रिकॉन के द्वारा सन्ड्री अर्निंग्स हमको कहाँ से आ सकता है, डिवीजन से भी आ सकता है. डिवीजन वाले हमको क्या करेंगे, किसी EMD या SD वाज इट मोर देन 3 years हो गया तो उसको क्या करेंगे, लिस्ट आउट भर के क्या करेंगे, उसको अर्निंग्स को हमको क्रेडिट देंगे. वो जो अर्निंग्स डिवीजन से होगा वो अर्निंग्स भी हम सन्ड्री अर्निंग्स में बताएंगे. और उनको क्या है अकाउंट्स कोड पारा 321 के हिसाब से PFA का परमिशन ले करके हमको क्या करेंगे, वो अर्निंग्स हमको ट्रांसफर करेंगे. वो लोग क्या करेंगे, जब भी हमको अर्निंग्स ट्रांसफर करेंगे एक मैन्युस्क्रिप्ट रजिस्टर मेंटेन करेंगे और जो उसमें दे विल रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन व्हाट इज दे आर ट्रांसफरिंग टू द
earnings. If any claim arises at a later date, रजिस्टर के हिसाब से जा करके हमको वापस वो डेबिट को उन लोग बुला करके किसी को रिफंड करना है तो वो करेंगे. So this is how this transfer will happen from other accounting units. Apportionment with other railways. दूसरे railways PP के मॉडल प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा किसी रेलवे का हमने हमारा पास जो अपॉर्चनमेंट रेलवे के पास है जो भी पीपीपी मॉडल से दूसरा कुछ प्राइवेट रेलवे बने गया, मतलब ये जो हो गया एग्जाम्पल हो गया पिपाव रेलवे या हसन मैंगलोर रेलवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके हिसाब से जो भी रेलवे हमारे पीपीपी के मॉडल के द्वारा उसके साथ भी जो भी अगर वो लोग तो हमको ट्रैफिक दे आर गिविंग अस ट्रैफिक, सो वी हैव टू आवर रिस्पांसिबिलिटी इज आल्सो टू शेयर द earnings. उनका बीच में भी हम we have to share that also that adjustment भी पार्ट सी में होगा. And originating earnings arising out of M1 BPRS site subterminal, मतलब अभी समझो आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है लेकिन आप है हावड़ा में है, तो आप क्या करेंगे, दिल्ली से चेन्नई का टिकट हावड़ा में ही ले सकते हैं, लेकिन जबकि हावड़ा के जो भी ईस्टर्न रेलवे होता है वहाँ के that will not have any amount between Chennai and Delhi, whatever is there, that amount will be collected by Howrah people. But actually that is not belonging to them. So whatever the amount that is collected by some other railway on behalf of other railways, that also will be advised through one M1B PRS site some terminal करके होता है, उसमें डेबिट और क्रेडिट हमको कितना जाना है, हमको कितना आना है. 1 minute. मैडम okay. Whatever is the earning arising out of M1B terminal, that is also shared between the railways as per the site some terminals. All these adjustments are carried out in Part C. Part C, what we have done is nothing but the ledger account of the home railway. In that, all the adjustments that are supposed to be carried out are carried out in Part C. Part D. What are all the nature of transactions traffic accounts office में होता है. So inward debit is nothing but RMC, diversion debits, TT earnings of other railway, postal haulage charges, mileage coupons, TT earnings, all these form the debit. This is nothing but the inward debit. Outward debit क्या होता है, erroneous withdrawal of credit of SD, EMD, PRS, earnings from M1 sites, all these form part of the outward credit. Credit to TAO, traffic accounts office का credit क्या होता है, inward credit. All transfers from Z earnings, from division, postal haulage, freedom fighters, etc. All those things will form the credit items of TOA. Outward debit जो होता है RMC bills, POPS, halt commission, conveyance charges, station pay orders, PWB, PRS earnings from M1B site, some diversion debits, all these form the outward debit. ये जो है debit ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है. इसके हिसाब से this part C will be dealt. Whatever debit is there, that is happening by e-recon. These are some of the items that I have included for better understanding. Okay, once this is over, part D. Part D is nothing but the abstract of earnings and statement of balances. कमाई का सार और इसका statement. So what are all their goods? Grand totals of Part C of coaching goods and sundry to Part D. इसका जो total जो है हम strike करेंगे, coaching goods और sundry का कर ले जाकर के Part D में करेंगे. This monthly journal entry is prepared. Final traffic JV for general books of railways. ये final traffic JV जब बनाएंगे इसमें हम बोलेंगे कि coaching goods और sundry का अलग-अलग हम बताएंगे. Only debit side of the traffic account is generalized and other railway account is generalized, duly detecting the part A. Part A में हमने वोचर जो दिया है उसको हम माइनस कर करके डेबिट साइड को हम जनरलाइज करेंगे, क्योंकि ये 2 बार अकाउंटल हो जाएगा. पहले एक बार हमने वो भी का आइटम लिया था पार्ट ए में. कहाँ पर लिया था, यहाँ पर लिया था पार्ट ए में. यहाँ पर
items not passing through station balance sheet carrying bills यहाँ पर हम लिया था. So this what we have taken in this will again we will minus it from here so that there will not be any double account. So this part D we will minus it so that only the debit side of the traffic. Debit side ही क्यों generalize करना हम, क्योंकि उसमें debit side में ही हमको मालूम होता है कि ये कौन सा आइटम है, पैसेंजर अर्निंग से या अदर कोचिंग है या गुड्स है, वो डेबिट साइड को देखने से ही मालूम होगा. क्योंकि क्रेडिट साइड में हमको वी विल नो ओनली अबाउट द कैश एंड वोचर्स. इट विल नॉट गिव यू द टोटल पिक्चर. द टोटल पिक्चर ओनली कैन बी सीन बाय ओनली लुकिंग एट द डेबिट साइड. सो नॉर्मली डेबिट साइड of the traffic accounts is generalized and credit is given to abstract X 1991, abstract Y 92 and abstract Z. This facilitates the finalization of final traffic account of the railway. जो है finalization traffic account का final account current हो जाएगा. This is how it is done. So जो भी whatever is there बच गया, जो पूरा earnings जो realize नहीं होगा वो इसको हम क्या करेंगे, suspense account में लगाएंगे. संदेही खाता में इसको suspense accounts को all debit are all earnings and credits are all recoveries. Balance represent unrealized earning. बाकी कमाई का जो वसूल जो होता है वो unrealized earning में होता है. ये कमर्शियल और गवर्नमेंट अकाउंट के बीच में इसको ट्रैफिक अकाउंट को हम लिंक करते हैं. यही दिस इज द पार्ट डी. हमने अपोर्शन मैट्रिक्स आपको बताया कैसा विभाजित किया जाता है. ये जो है ये रेलवे का हम बताया. इसका जो है these are all the inward share, these are all the outward share. So हम दूसरा रेलवे को जो देना है इसमें लिखा जाता है इसके ट्रांसफर मैट्रिक्स के हिसाब से. मैट्रिक्स जो है PRS, UTS और गुड्स के लिए मैट्रिक्स आएगा. सो दैट वी हैव टू, एंड BPT का भी आएगा लेकिन लेट से आएगा. सो दिस PRS एंड UTS मैट्रिक्स and also the goods matrix, the inward and the outward share that we have discussed in part D will be done as per the apportion matrix given by this matrix. Nageshwara garu. Nageshwara garu. Hello. Sir, tell me, sir. With this I have completed the traffic book. Anything in doubt is there? I will ask the queries. The participants, please raise the hand. Any doubts are there? Please share the PPT again, sir. That is not downloaded. Downloaded, huh? Okay, I will share. Problem is there. Yeah. I have downloaded. Any queries? Please raise the hand. I'll send to you in WhatsApp. Okay, sir. Once again, this I have downloaded. I don't know why it is not completely down. Here it is a download. Some mistake is there. So please send it. I will send again. Once again to you about it. Please share. Sir, in the queries box, few queries is there. Demerit charges and warfare charges also discussed in other coaching units. Please clarify. This is pertaining to purely coaching items. These are also for goods only. Actually, major is there. For coaching, it is very minor. Just because it is there in the code book, I have given that. But major earnings will come only from warfare and damage will come from goods earnings. So that I will not leave any item. That's why I have included. So you need not show much importance for coaching for this damage, but for goods we should show for damage. Okay, so carriage bills and storage charges. Carriage bills are nothing but what are all the concession vouchers that you are giving. That is the police warrants, military warrants, all those things form part of the carriage bill. These are called carriage bills because in lieu of cash, these vouchers are exchanged. So we will take it, and after that we will try to get it from the respective departments by raising bills on them. This is nothing but the carriage bills. Storage charges are those charges for storing any consignment for some period of time. Suppose if any material is there which cannot be immediately taken, they will put it in storage and they will take it at a later. For that, some charges are collected. This is nothing but the storage charges. Traffic book part D, discuss once again. One query. Which one? One query in the chat box.
Please discuss traffic book part D again. Part D. Yes. Okay. In part D, after the part C is struck, that is part A and part B and part C, all adjustments are taken. There once again the grand totals are shifted to part D. In that, what happened, we'll prepare for final traffic JV for general books. That means this final traffic JV means where you are trying to show what are all the earnings that you are getting from abstract X, Y, and Z. In doing so, what we will do is we will generalize that. By where we will generalize, because only in the debit side of the balance sheet we will know what are all the items that belongs to the passenger and other coaching and also goods. If we see the credit side, we will not get anything, because in the credit side only cash and vouchers are there, but we don't know what are all the types of transaction that is there. That is why debit side is generalized by giving credit to the abstract X, Y, and Z. This is how this is done. Part D and part C, how combined and get result? Huh? Part D and part C, how combined and get Part B and part C, no. Part B total we are. Priyaji, please unmute and you can ask your query. Yes, please. And please discuss about expected questions asked Questions, on time what after is- this exam. What is traffic book? How many parts are maintained? What is apportionment? How apportionment is done? All those things they will ask. Yeah, Ajay Singh, please unmute. सर नमस्ते हाँ बोलिए. सर सैलरी अब्स्ट्रैक्ट में आपने बताया वैल्यू चार्जेज एंड डिपॉजिट वर्क चार्जेज ये क्या है डिफरेंस Value charges and एंड डिपॉजिट वर्क चार्जेज deposit works are those charges that are collected when you do some work for outsiders. That is at the rate of 12.5% that between are mutually shared among the other parties. So that will for the work that you are undertaking. Value charges means when year to year, suppose something is crossing your railway line. So for that we will have to carry out specially for that particular person. That means suppose you have some waterway or you have got some pipe to be taken across the railway track. At that time, because the work is being done at his instance, we will collect because it is encroaching the railway track. So for that, we will charge some, levy some charges, that is the value charges. Okay, thank you. Thank you. Narayanan, please unmute. Sir. Yeah. Sir, actually, I am writing only general rules and procedure. I got a merit exemption, all other papers. Okay. Only one and a half months, even 1 month or 10 days is left out. Is it one request, humble request, that you are this classes very super. You are in elaborately. You people are taking the classes and very useful for us, knowledgeable. Everything is okay. Thank But you. it is my request that, if possible, you can set some questions which are expected this time in the GRP. Then not expected, but some questions which may ask every time. They're asking every year, no. So that you can give us these questions. If you go through all these questions in traffic, this and all questions, and in stores, because GRP comprises of all stores, traffic, workshop, establishment expenditure. So this set of questions you have to go through. So you can teach on that questions also. It will be very useful for us, so that this is the last chance given by the railway board to us. So to come up. So is it okay, sir? If I am right, can this be considered? Naishwar, can you have any questions available ready? You can Yeah. share in the group. Yeah, actually the sessions also designed as per the questions only. Because suppose a question is asked on traffic book, this session will be helpful. Traffic book and all these questions. See, if you follow all these sessions, you can able to attempt the exam very confidently. Okay, Because okay. see, from this session, they can ask any type of question. Okay, sir. Okay, sir.
Okay, somebody has raised hand. Yeah, Miss Galaxy, unmute. Sir? Galaxy, हेलो unmute. Huh? हेलो हाँ, बोलिए। सर, ये पार्ट डी में क्रेडिट साइड एब्स्ट्रैक्ट x इक्वल टू 90 और 91 क्या है सर ये? वो 90 91 क्या है कि हमारा F2 के हिसाब से उसको 90 91 अब्स्ट्रैक्ट एक्स मतलब 90 मतलब पैसेंजर है, 91 इज अदर कोचिंग, Yes. अब्स्ट्रैक्ट वाई 92 गुड्स है, अब्स्ट्रैक्ट जेड मतलब 93 है। ये F2 के तो हिसाब 90 से को किया जाता है। 90 को किस रूप में कोडिंग कर रहे हैं सर? ये प्लान हेड है क्या? ये पैरोल हेड नहीं है, अर्निंग का जो है अब्स्ट्रैक्ट पैसेंजर का नंबर इज गिवन एज 90 इन F2। Yes. और क्रेडिट साइड इट मींस क्रेडिट साइड का मतलब क्या हुआ सर? क्रेडिट मतलब एक डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा ना। क्रेडिट मतलब ये पैसेंजर के हिसाब से कितना कमाई हुआ है, अदर कोचिंग में कितना कमाई है 90 बताएगा, 91 में अदर कोचिंग बताएगा, गुड्स में जो है 92 माल में बताएगा, जेड सन्ड्री में कितना है 93 बताएगा। ये क्रेडिट मींस अर्निंग? हाँ, अर्निंग है पक्का। ओके ओके, थैंक यू सर। राइट। Yeah, next, Priya Bhatia, please unmute. सर ये बैलेंस शीट के जैसा नहीं रहता है क्या है? एज पर कमर्शियल के हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, पर दिस इज टोटली अर्निंग्स है। हाँ, अर्निंग बैलेंस। तो डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? डेबिट साइड में आपको जो टिकट्स इशू किया है पैसेंजर में, लोकल पैसेंजर कितना है, फॉरेन पैसेंजर कितना है, उसका तो हिसाब होगा ना। वो तो हम बताया एक नमूना में आपको बैलेंस शीट में, कोचिंग बैलेंस शीट कैसा रहेगा। हाँ आप देखना हाँ नहीं उसको। हाँ देखो एक बिट आपके लिए बताऊंगा, और एक इसमें देखो पैसेंजर जो होता है लोकल लगेज, ये जो है डेबिट साइड में इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है इसका, सो लोकल होता है पैसेंजर लगेज, ये पूरा जो है डेबिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड में क्या होता है, कैश मिलता है और बिल्स या वोचर्स मिलता है क्रेडिट साइड में। सो डेबिट साइड को में हमको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये जो है इसके ट्रैफिक में से हमको इतना अर्निंग्स हुआ है। दिस इज द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड। ओके सर, थैंक यू। Okay. Sir, one more query in the chat box. Please tell sir. again about apportionment. अपॉर्शनमेंट, ओके। अपॉर्शनमेंट मतलब पार्ट बी, हमने पार्ट बी को जब डिस्कस किया है, अभी एक रेलवे समझो, आपने किसी माल या किसी पैसेंजर इज परफॉर्मिंग जर्नी फ्रॉम वन रेलवे टू अनदर रेलवे, इफ इट इज इन अदर रेलवे, सपोज इज परफॉर्मिंग जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा, सो कितना रेलवे लग गया उसमें, मेरे ख्याल से 2 या 3 रेलवे उसमें लगा है, तो उसमें मानो 100 रुपया खर्च कर दिया उसमें, सपोज एग्जाम्पल। सो व्हाट हैपेंस, ये जो है 100 रुपया जो है ये 3 रेलवे के अंदर इसको बांटा जाता है। तो पहले दिल्ली का जो इसके किस हिसाब से होता है, ये किलोमीटर के हिसाब से होता है। सपोज समझो इसका भी 100 किलोमीटर है और 100 रुपया भी कलेक्ट हो गया, तो पहला 10 किलोमीटर जो है नॉर्दर्न रेलवे को, बाद में का जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को, उसके बाद में जो है ईस्टर्न रेलवे को, इसके हिसाब से वो किलोमीटर के हिसाब से दैट अमाउंट विल बी डिवाइडेड। दिस इज हाउ द अपॉर्शनमेंट इज डन। सो इसका जो नियम होता है उसके हिसाब से दैट अपॉर्शनमेंट इज डन। एंड ये जो है लार्ज स्केल में होता है, जब बहुत लोग पैसेंजर जाएंगे, बहुत माल जाएगा, तो इसके हिसाब से वो अपॉर्शनमेंट किलोमीटर के हिसाब से बाइफरकेट होता है। दिस इज हाउ द अपॉर्शनमेंट इज डन। दिस इज डन इन पार्ट बी। पार्ट बी में जो है हमारा रेलवे को जो भी आना है दूसरा रेलवे को देना है वो उनको देंगे, और दूसरा रेलवे से हमको जो भी मिलना है वो हम उनसे कलेक्ट करेंगे। ये जो है पार्ट बी में इसका हिसाब विभाजित आपस में होता है। दिस इज हाउ इट इज डन। इट इज शेयर्ड बिटवीन दिस 2 रेलवेज बाय वे ऑफ दिस मैट्रिक्स। हमने लास्ट में मैट्रिक्स बताया था ना आपको, ये मैट्रिक्स, इसमें इसके हिसाब से आपको लिखा रहता है कि ये किस तरह से होगा। तो हमको आपको सेंट्रल रेलवे को इतना अमाउंट देगा, लेकिन सेंट्रल रेलवे से साउथ सेंट्रल रेलवे को इतना अमाउंट आएगा। सो इसके हिसाब से दिस अपॉर्शनमेंट मैट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स द पार्ट बी इज डिसाइडेड। सो हम इसका टोटल लेकर के हम पार्ट सी को चलेंगे। No queries from the participants. Okay, can you wind up? Yes, sir. Okay, sir, if there are no further doubts, clarifications, then we'll wind up the session. Okay. On behalf of IRIFM, I thanks the K.K. Subramani, Assistant Financial Advisor, for taking up the session on
traffic book and also clarifying any doubts. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. We have session on Monday, that is contract management. The session starts at 3 p.m. Thank you all.